Hello children, how are you? I hope you all are studying well. Okay children, we have been learning about so many different moral stories through our English chapters, and we are also taking good lessons about the nature through our poems. So बच्चों, do you like to go on a fun trip? Picnic पे जाना अच्छा लगता है? So let's look at this fun trip of Tinku in this chapter. The name of the chapter is Tinku's Fun Trip. Let's see what happens during this trip. The prologue says, this is a typical children's story developed in the 3 stages of an all well, not well, all well again pattern. Little Tinku looks forward to a great time with her 2 visiting aunts, Monimashi and Nuttupishi. Both are teachers. One is good at telling stories and the other is good at photography. Her mother hopes it will not rain while they have guests. But Tinku feels it could add to the fun. It rains heavily the day they arrive and the aunts are upset with the inconvenience it causes. They have to walk down a narrow ledge of a pathway to the house laden as they are with raincoats, shawls and umbrellas. All they do is grumble about the weather and get into bed with hot water bottles. The next day surprises them with bright weather. The aunts enjoy the breathtaking view of colorful flowers in the garden and the snow-capped mountains in the distance. The story ends on a happy note. So बच्चों, ये एक टिपिकल पिकनिक सिचुएशन है जहाँ पे समटाइम्स आपको लगता है कि अरे यार बारिश की वजह से हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे और फिर धूप निकल आती है एंड देन वी ऑल हैव फन. सो दिस इज़ अ टिपिकल स्टोरी. ओके, सो लेट्स रीड दिस स्टोरी एंड एंजॉय इट. बिफोर दैट लेट्स वार्म अप. Cherrapunji and Mawsynram in the state of Meghalaya receive more rainfall than any other place in the world. Find out how local residents cope with the incessant rain in these places. So बच्चों, मेघालय के ये 2 जगह जो है चेरापूंजी एंड मौसिनरम, ओके, यहाँ पे बहुत बारिश होती है. ओके, और पूरे कंट्री में जितनी नहीं होती होगी उतनी बारिश वहाँ पे कंटिन्यूसली होती है. तो यू हैव टू फाइंड इन्फॉर्मेशन कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो कैसे मैनेज करते हैं. हाउ डू दे लिव विथ सच सर्कमस्टांसेस विथ रेन कंटिन्यूसली. ओके, now let's read this wonderful story. Okay, Tinku was greatly excited to have her aunts Monimashi and Nuttupishi coming to Duliathal for a visit. Okay, both were teachers. Monimashi taught in a school in Calcutta, now Kolkata, and Nuttupishi somewhere in the suburbs. They had not been to the hills before. So, टिंकू जो है वो दुलियाताल में रहती है. ओके, और उसको मिलने के लिए उसकी 2 आंट्स आ रही है. एक होती है मोनी माशी और दूसरी होती है नुतुपिशी. ओके, जो मोनी माशी होती है वो स्कूल में, कोलकाता के स्कूल में टीचर है और नुतुपिशी के ही और सबर्ब्स में है. ओके, बट उन्होंने कभी भी हिल्स पे कभी गई नहीं है, फर्स्ट टाइम उनका है. सो व्हाट विल दे थिंक ऑफ दुलियाताल, आस्क्ड टिंकू. दे लव इट, वोंट दे? I hope so, said Tinku's mother. I only hope it doesn't rain when they arrive. So, टिंकू अपनी मम्मी से पूछ रहा है कि आपको क्या लगता है कि उन्हें दुलियाताल कैसे लगेगा? Will they enjoy over here? तो मम्मी कहती है I hope so, but बारिश नहीं होनी चाहिए when they come. Why not? asked Tinku surprised. It's lovely when it rains. All the little streams become rivers where we can sail boats. Tinku's mother laughed. You used to hate the rains too, Tinku, she said. Oh, that was very long ago, said Tinku. I'm used to Duliatal now and it's a lovely place. As it happened, there was a heavy downpour on the morning of their arrival. सो टिंकू उसकी मम्मी से कहता है कि क्यों नहीं अच्छी लगेगी बारिश उन्हें, इतनी अच्छी होती है बारिश. वी कैन मेक स्मॉल स्मॉल पेपर बोट्स, और जो स्ट्रीम्स होती है वो रिवर्स के जैसे बन जाती है. पानी की जो स्ट्रीम्स होती है वो वैसे बन जाती है. वी कैन सेल देम ओवर दैट. तो मम्मी कहती है पहले तुम्हें भी अच्छी नहीं लगती थी बारिश, अब क्या हुआ? कहते हैं अब तो मुझे बहुत अच्छी लगती है बारिश और अब मुझे दुलियाताल भी बहुत अच्छा लगता है. ओके, सो ऐसे हुआ कि उस दिन सुबह जब उसके आंट्स आने वाली होती है वहाँ तभी ही बारिश शुरू हो जाती. It's time to go to the bus stand, said Tinku's father peering at the wall clock. Where are the raincoats and the umbrellas? Let's take a couple of extra shawls as well. It's kind of shivery. Could I come to the bus stand with you? Tinku asked her father.
Yes, but wear your raincoat and don't forget your gum boots, he said. Rain continued to pour down when the half-filled bus from Kathgodam arrived at the bus stand. So, जो टिंकू के पापा होते हैं वो कहते कि आंट्स को लेने के लिए, आंटियों को लेने के लिए टाइम हो गया है, लेट्स गो टू पिक देम अप. अम्ब्रेला लेके जाते हैं, रेन कोट्स लेके जाते हैं, एक्स्ट्रा शॉल्स भी लेते हैं क्योंकि काफ़ी ठंड पड़ने लगी है. सो टिंकू पूछती है कि क्या मैं आपके साथ आ जाऊं? तो कहते हैं हाँ, बट तुम्हें रेनकोट और गमबूट्स पहनने हैं. ओके, सो फिर वो सब चाहते हैं काठगोदाम उनको पिकअप करने के लिए. टिंकू जम्प्ड अप एंड डाउन ईगरली. शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ बोथ हर aunts. Moni Mashi told her the most enchanting stories when she visited her in Calcutta. And Nutupishi was great fun to be with and quite a good photographer. But they did not seem to be among the passengers. Okay, तो टिंकू काफ़ी एक्साइटेड रहती है. ओके, बिकॉज उसको उसकी दोनों मासियाँ बहुत पसंद है. ओके, और जब वो कोलकाता जाती है तो उसकी जो मुनी मासी होती है उसको अलग अलग स्टोरीज सुनाती है. ओके, और जो नुतुपीशी होती है वो भी काफ़ी मज़ेदार होती है. उसको अलग एंड शी इज़ अ वेरी गुड फोटोग्राफर ऑल्सो. सो शी एन्जॉयज़ अ लॉट विथ बोथ ऑफ हर आंट्स. ओके, पर जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं वो देखते कि वो तो पैसेंजर्स के बीच में है ही नहीं. Nutu, Moni called out Tinku's father in a loud voice. Are you there? Hurry up and get down. The bus will leave in a minute. Two huddled figures, almost buried under cardigans, overcoats and shawls, crawled out of the bus. What monstrous weather, said Moni Mashi in a feeble voice. तो उन्हें तो वो नज़र नहीं आती. फिर उसके पापा आवाज़ लगाते. तो तभी ही ये दो लेडीज़ बस के अंदर से उठकर खड़ी हो जाती है और देखते हैं, उसके पापा देखते हैं कि उन्होंने बहुत सारे कपड़े पहने हैं, कार्डिगन्स, ओवरकोट्स, शॉल्स. ओके, और धीरे धीरे वो बस के अंदर से बाहर निकल रही है और कहते हैं ये क्या क्लाइमेट है, ये क्या वेदर है. इट्स फ्रीजिंग, सेड नुतुपीशी. Really, Dada, I don't know why you asked us here at this time of the year. It always rains in the hills. You'll soon get used to it. Everyone does. तो कहते कि आपने हमें क्यों बुलाया इस टाइम पे जब इतनी सारी बारिश हो रही है, देखो कितनी ठंड लग रही है. तो कहते कि यहाँ पे हिल्स में हमेशा बारिश होती है, तो तुम्हें जल्दी इसकी आदत हो जाएगी. said Tinku's father, taking the bags from their hands. Tinku, cried Moni Mashi, catching sight of her. Why did you come out in this rain? And where's the taxi? Asked Nutupishi, looking around. Tinku burst out laughing. We can't go to our house by taxi. Nutupishi, the path's too narrow. A rickshaw then? Asked Moni Mashi. I'm afraid you will have to walk, said Tinku's father, laughing at the look on their faces. It's not far. Here, get into these raincoats and take these umbrellas. तो तभी मोनू माशी जो होती है, मोनी माशी के पास टिंकू कूद के जाती है और वो पूछती है कि अरे टिंकू तुम इतनी बारिश में क्यों आई? तो कहते कोई बात नहीं. और फिर वो पूछते हैं टैक्सी कहाँ पे? तो कहते कि टैक्सी तो है नहीं. फिर अच्छा तो हम कैसे जा रहे? तो उन्होंने कहा कि रिक्शा में. कहते नहीं नहीं, रिक्शा भी नहीं जाएगी क्योंकि वो नैरो पाथ है, हमें तो चल कर जाना पड़ेगा. और उन्हें रेनकोट्स वगैरह देते पहनने के लिए. ओके, नाउ लेट्स ट्रैक योर परफॉर्मेंस थ्रू दिस परफॉर्मेंस ट्रैकर. लेट्स आंसर दीज क्वेश्चंस क्विकली. Okay, now let's move ahead. Walk all the way to your house, cried Nutupishi. And I don't see any road, said Moni Mashi. There it is, said Tinku, pointing to the narrow track leading down to their house. Moni Mashi said, I can't go down to that path. It's so narrow and there's such a steep drop on the other side. There is not even a railing one can hold on to, said Nutupishi. Don't be frightened, said Tinku's father. Here, hold my hand. And you hold mine, Moni Mashi, said Tinku. तो जैसे ही नुतुपीशी बोलती है कि तुम्हारे घर तक चल के जाना पड़ेगा, मोनी माशी कहती है मुझे तो रोड भी नहीं दिखाई दे रहा है. ओके, तो टिंकू कहती है वो वहाँ पे है और वो एक नैरो पाथ की तरफ इशारा करती है. और फिर कहती है मैं नहीं जा पाऊँगी इस पे. मोनी माशी कहती है कि देखो देखो कितना ढलान है इस पे, मैं नहीं जा सकती हूँ इस पे, और यहाँ पे तो रेलिंग भी नहीं है, मैं गिर जाऊँगी. तो पापा कहते हैं उसके कि तुम मेरा हाथ पकड़ लो. और फिर टिंकू कहते हैं आप मेरा हाथ पकड़ लो मोनी माशी. डोंट वरी, यू वोंट फॉल डाउन. It seemed like a never-ending journey to Tinku.
Both her aunts were so scared of the narrow path that they took ages to cover the short distance. Thank God we've reached the house, said Monimashi with a shudder as they neared the gate. I'm not going to step out until it's time to leave. सो वो दोनों इतनी डरी हुई रहती है कि उन्हें घर तक पहुंचने में बहुत टाइम लग जाता है. और जैसे ही वो घर के यहाँ पे पहुंचते हैं, मोनीमाशी कहती है कि अब मैं इस घर से बाहर नहीं निकलूंगी जब तक मुझे घर जाने का टाइम नहीं आता. ओके, सो आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू आइदर, सेड नुत्तुपिशी. There's nothing to see except dripping trees and dark bushes. I don't think we'll get to see the snow range at all. तो नुत्तुपिशी भी कहते हैं मुझे नहीं लगता है मैं भी निकलूंगी. ओके, और यहाँ पे और कुछ दिखने जैसा है ही नहीं, सिर्फ बारिश का पानी ड्रिप हो रहा है और फिर डार्क बुशेस है. ओके, स्नो रेंज तो बिल्कुल नहीं दिखेगी. Oh yes, you will when it is bright and sunny, said Tinku in a comforting voice. तो टिंकू उनको कंफर्ट देते देते कहते कि आप ज़रूर देखोगे. ओके, बट जब वो ब्राइट होगा और सनी होगा आपको दिखाई देगा. Here we are, said Tinku's father, opening the gate. Her mother was already at the door to welcome them. Soon after they had their tea, Monimashi and Nuthupishi dived under the quilts and blankets with a hot water bottle each. But when they opened their eyes the next morning, the whole place was filled with sunlight. The sloping garden was full of colors. The snow range beyond the garden shone golden in the sun. The dark hills in the distance had silver trickles falling down into the green plains below. Oh, how beautiful! cried Monimashi and Nuthupishi together. ओके, तो जैसे वो घर पे जाते हैं थोड़ी देर के बाद खाना पीना करके चाय वाय पी के वो लोग ब्लैंकेट्स और क्विल्ट्स के अंदर जाके सो जाते हैं. और फिर अगले दिन सुबह जब उनकी आँख खुलती है तो वो देखते हैं कि बाहर इट्स बिकम ब्राइट एंड सनी. Okay, the whole place has changed and now they can see the snow range beyond the garden. It's beautiful. The golden sun has shone. Okay, and then they can see the silver trickles falling down into the green plains. Oh, उनको तो ये नज़ारा बहुत पसंद आता है. They say it's so beautiful. So Tinku कहती है I told you so, said Tinku, joining in the laughter that followed. So बच्चों, दिस इज़ सच अ वंडरफुल स्टोरी. ओके, आपके साथ भी ऐसा होता होगा जब आपके रिलेटिव्स आते होंगे फॉर सम रीज़न. कभी कभी वो स्टार्टिंग में तो डिसअपॉइंटेड रहते और बाद में देन दे स्टार्ट एंजॉइंग विथ यू. हैजंट इट हैपेंड विथ यू? So now quickly reread this chapter, talk to your friends and find out if they have had such experiences. And don't forget to do the difficult words, important words, their meanings and the back exercises.